Assalamu alaikum everyone. Hi everyone. Good evening. Um, Today I would like to talk about because I've been asked by one of my students to record a video, to make a video on IELTS writing tips, right? So there's so much to talk about the IELTS writing, but I wanted to talk about the 5 tips, that is very important. Okay? So the first tip जो है वो है understand the prompt means the question, that is the most important thing to do. What the question is asking you, that's something that you have to understand. ये ना हो कि इधर उधर की कहानी और irrelevant stuff आप लिख ले उसमें, ठीक है. नंबर सेकंड ये है put your best foot forward, means कि you should know the order in which you will be presenting the ideas, ठीक है. ये है कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कौन से आइडिया को करना है, फिर आइडिया को जो स्ट्रॉन्ग बॉडी पैराग्राफ है ना, शुड कम फर्स्ट टू क्रिएट द बेस्ट इम्प्रेशन, तो स्ट्रॉन्ग बॉडी पैराग्राफ को स्टार्ट में लें, ठीक है, फॉलोड बाय द अदर बॉडी पैराग्राफ. आई थिंक 250 वर्ड्स है फॉर एग्जांपल टास्क 2 में, तो उसमें मेरा ख्याल है कि 2 पैराग्राफ्स काफ़ी होंगे, ठीक है. नंबर थर्ड पॉइंट, कीप इट सिंपल. Your idea, that is not testing, IELTS के examiner आपको how well you know the subject or how smart you are, they don't have any concern with that. उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है. वो क्या जानना चाहते हैं, they assess your ability to present your ideas clearly and cohesively in English, right? So what you need to do is to जो आप अपना क्या कहते हैं उसको टॉपिक सेंटेंस है, उसको आप सपोर्ट करें. सपोर्ट योर आइडिया विद एविडेंसेस. ओके, एविडेंस किस तरह, एन एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन. देन कंक्लूड योर पैराग्राफ बाय लिंकिंग द सपोर्ट टू योर थीसिस, ठीक है. थीसिस स्टेटमेंट होती है, उसके साथ आप उसको लिंक करें, ठीक है. नंबर 4 पॉइंट जो है वो फोकस ऑन लैंग्वेज नॉट ऑन लेंथ, ठीक है. इतना लेंथी ज़रूरत नहीं है कि आप इतने लॉन्ग विंडेड हो, लेकिन टास्क 2 एसेज फॉर एग्जांपल जिसमें आपको 250 वर्ड्स की ज़रूरत होती है ना, सो उसमें स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ्स लिख के बिल्ड योर वोकैबुलरी, cohesive words and phrases, synonyms, familiar yourself with all these things, before you write down that. इन चीज़ों से आपकी जो है ना वो अच्छी बन जाएगी आपकी राइटिंग, ठीक है. नंबर 5 पॉइंट जो है वो प्रूफ रीडिंग है, ठीक है. जब आपने सारा पैराग्राफ कंप्लीट करके आपने लिख दिया, उसके बाद आपको प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे आपने 1-2 मिनट लगते हैं उस पर, ठीक है. तो डोंट फॉरगेट टू डू प्रूफ रीडिंग फॉर योर टास्क, राइटिंग टास्क. ओके, आई थिंक इट हेल्प्स. तो ये वीडियो शॉर्ट्स ही है लेकिन इट विल हेल्प यू लॉट. थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, share and like the videos.